Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. Today's topic, applications of hyperconjugation. First application is stability of alkenes. Hyperconjugation is, as I told you earlier, interaction between sigma bonds of alpha carbon and adjacent pi bond or simply sigma pi interaction. अब इस हाइपर कंजुगेशन से हम क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स. आई विल राइट सम अल्कीन्स हियर. 1 CH3 CH double bond CH2. It is called propene. Number second is CH3 CH double bond CH CH3. It is called butene. So which of these two alkenes is more stable will depend upon the number of interactions between sigma bonds of methyl group and pi bond. As you can see, the first alkene is, you can see carbon-carbon double bond. This is a pi bond and adjacent to it we have methyl group. Methyl group. So this methyl group has 3 carbon hydrogen sigma bonds. They will one by one interact with this pi bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे. हाउ मेनी इंटरेक्शंस? 3 interactions because this carbon has 3 sigma bonds. Now alkene number second is called butene. Butene. इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, CH3 and CH3. First of all, sigma bonds of this methyl group will interact with this pi bond. This sigma bond, this sigma bond and this sigma bond. They will one by one interact with this pi bond. Then on the other side we have one more methyl group. It has also 3 CH sigma bonds. They will also interact with this pi bond. So in total, alkene second, butene, it's called butene. It will have 6 interactions between sigma bonds and pi bond. So it will be more stable. It will be more stable. So I will write alkene. So simple. So butene is more stable than propene. Okay, because of more number of interactions between sigma bonds and pi bond. Okay, so more the number of such interactions between sigma bonds and pi bond, more stable will be the alkene. So this part is clear. मैंने कल भी इसकी एक एग्जांपल दी थी. अगर हम डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में रखेंगे मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, alkene becomes more stable. Is this clear? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. दूसरा एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपरकंजुगेशन, दैट इज hyperconjugation and stability of
hyperconjugation and stability of carbocations. Carbocations. You know carbocations? They are reactive intermediates where carbon carries positive charge. Carbocations are those reactive intermediates where carbon carries positive charge. And stability of those carbocations we can explain using hyperconjugation. I will explain it in a very simple way. Have a look. Have a look. This is CH3 CH2 CH3 CH2. Only 3 sigma bonds at carbon. So that carbon which has only 6 electrons or only 3 covalent bonds contains positive charge. बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि एक एटम मॉलिक्यूल से चला गया है और वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गया है. तो इस कार्बन पर हम रखते हैं पॉजिटिव चार्ज. दिस इज कार्बोकेटन. कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड एम्प्टी ऑर्बिटल. एम्प्टी ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. और इस कार्बोकेटन का नाम है प्राइमरी, या इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बोकेटन. ओके. अब हाइपर कंजुगेशन का यहां स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप देखो बेटा, यहां पर है एम्प्टी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. लेकिन एडजेसेंट में जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड. व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. याद रखना बेटा. एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. वो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. तो अगर यहां पर है एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और यहां पर है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, क्या होगा? यहां पर एक इंटरेक्शन, जस्ट लाइक दिस इंटरेक्शन. इसको बोलते हैं हम इंटरेक्शन बिटवीन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल. ओके. और इससे स्टेबिलिटी आ जाती है कार्बोकेटन में. दिस लाइन, इट इज नॉट ए लाइन, ये कोई लकीर नहीं है. इट्स ए सिग्मा बॉन्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. और ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा विद एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, जिससे कार्बोकेटन को स्टेबिलिटी मिलती है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है कार्बोकेटन की, उसको स्टेबिलिटी आ जाती है. इसी तरह दूसरा बॉन्ड भी इंटरेक्ट करेगा, तीसरा कोवलेंट बॉन्ड भी इंटरेक्ट करेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड्स 1 by 1 इसके अलाइनमेंट में आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के अलाइनमेंट में. सो दिस कार्बोकेटन हैज 3 इंटरेक्शंस between completely filled orbital, that is sigma bond, and empty orbital. Empty orbital. ओके. जिससे कार्बोकेटन को स्टेबिलिटी मिलती है. दिस इज स्टेबलाइजिंग. This is stabilizing. तो पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, उतना कार्बोकेटन बनेगा मोर स्टेबल. आई होप इट इज क्लियर. इंटरेक्शन बिटवीन
completely filled orbital and empty orbital. Now one more carbocation I will show you. Second one, this one. It's a carbocation. This carbocation, its name is secondary, or it's also called 2-degree carbocation. अब आप कहेंगे सर इसको 2 डिग्री क्यों बोलते हैं, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री कार्बन पर. And what is 2 degree carbon? Which is directly attached to 2 adjacent carbons. तो इसके 2 पड़ोसी कार्बन है, ये और ये. अब उसी पर पॉजिटिव चार्ज. अब देखेंगे हम इसमें हाइपर कंजुगेशन. आप देख सकते हैं बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल और ये फिल्ड ऑर्बिटल ऐसे. तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 and 3, और यहां से भी 4, 5 and 6. तो इसमें होंगी 6 इंटरेक्शंस. बिटवीन filled orbitals, completely filled orbitals, या sigma bonds, CH sigma bonds, and empty orbital. So this carbocation, secondary carbocation, is more stable. It is more stable. It is more stable than 1 degree carbocation. Similarly, if we replace this hydrogen with a methyl group, it will become tertiary carbocation. That will have 9 interactions. So that carbocation will become more stable. So we can arrange carbocations in order of their stability on the basis of hyperconjugation, like this. So order of stability. Order of stability of carbocations. Order of stability of carbocations. 3 degree more stable than 2 degree. 2 degree more stable than 1 degree. And 1 degree is more stable than methyl carbocation. This one, it has no adjacent carbon. It is least stable. Least stable. Thank you. Follow my channel for more videos and subscribe to it. Press the icon button.